हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सियारामा आईएएस। मेरा नाम है डॉक्टर सलोनी शर्मा और मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ एक और डेली न्यूज एनालिसिस के लिए विच इज ऑफ 12th ऑफ जून 2026। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आई मेक श्योर कि जो भी आज टॉपिक्स कवर होंगे उसके साथ में आपके क्वेश्चंस कवर्ड रहेंगे आइदर ऑफ प्रीलिम्स और ऑफ मेंस। ठीक है, आज के लिए मेंस का मैंने एक क्वेश्चन इंटीग्रेट किया है इन द लास्ट ऑफ द सेशन, यू कैन सी दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स फॉर टुडे। 6 टॉपिक्स आज कवर करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट टॉपिक इज एफर्ट्स ऑन टू कंटेन निपा आउटब्रेक। निपा वायरस है जिसका आउटब्रेक हुआ है, उसके उसको कंटेन करने के लिए एफर्ट्स जारी हैं। ठीक है, दिस टॉपिक इज ऑफ साइंस एंड टेक। Next, coming on to the second topic, Modi tells states to prepare for El Nino's impact. Yeah, this topic is from your environment topic, basically climate change पे है ये. Next is your third topic, Bacillus dysentery cases rise in Kerala. This is again a science and technology topic. Fourth topic is Center lifts excise duty on higher ethanol blended petrol. So this topic is an economics article. You can also consider it as an environment topic. Overlapping है दोनों subjects का. Fifth topic is Odisha students take Shakespeare in Sanskrit to Romani. This topic is from art and culture. Basically ये languages का topic है, history का topic है. ठीक है, this is important. Then your sixth topic, should India incentivize bigger family? ठीक है, this topic is related to your society part. Demographics पे है, basically population demographics. ठीक है, you can also consider it as a part of economy. ठीक है, या फिर जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका पार्ट कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, so let's start with all the topics. Okay. So the first topic for the day, efforts on to contain Nipah outbreak, says Kerala Minister. Nipah outbreak हुआ है केरला में. Nipah is a virus. निपा वायरस डिजीज है. ठीक है, जिसका आउटब्रेक हुआ है केरला में. अब उसको कंटेन करने पे, उसको रोक लगाने पे उसकी एफर्ट्स जारी हैं. ठीक है, दिस इज द हेडलाइन. तो बेसिकली अभी निपा पे आते हैं. निपा है क्या? फर्स्ट विल कम टू दिस, देन वील सी व्हाट इज देयर इन द आर्टिकल. निपा वायरस, इसको हम एनआईवी से भी डिनोट करते हैं. इट इज अ हाईली इन्फेक्शियस जूनोटिक वायरस. जूनोटिक वायरसेस कौन से होते हैं? जो कि एनिमल्स के थ्रू स्प्रेड करते हैं, जिनका रिजर्वॉयर कोई ना कोई एनिमल में होता है. दैट इज योर जूनोटिक वायरस. जू मीन्स एनिमल एंड नोटिक इज अ कैरियर. जो एनिमल होता है वो इस वायरस को कैरी करता है. सो दैट इज वाई दीज आर नोन एज जूनोटिक वायरसेस. So this Nipah virus is a zoonotic virus and this is a highly infectious virus. ये first कब identify हुआ था? It was first identified in 1998 to 99 in Malaysia. So this is also important कि मलेशिया में first time ये identify हुआ था. Second thing, according to the World Health Organization, it is transmitted from animals to humans. Zoonotic virus है, animal से humans में transmit होएगा. कौन सा animal इसको transmit करता है? It is your fruit bats. इसको हम टेरोपोडिले भी बोलते हैं फ्रूट बैट्स को. दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट टर्म बट फ्रूट बैट्स इज इम्पोर्टेंट. अभी हाल फिलहाल में fruit bats have been a reservoir of one more important viral infection which has spread throughout some parts of a country. Can you name that virus? Ebola virus. Ebola virus का reservoir भी fruit bats है. ठीक है, I have covered it in a previous article 1 or 2 days ago. तो Ebola viruses में भी जो fruit bats हैं वो reservoir होता है and this Nipah virus इसमें भी fruit bats में reservoir होता है. Okay? So this you have to remember. This is an important thing. Next, with fruit bats as the natural reservoir. Natural या primary reservoir कौन है? Fruit bats हैं. Second, and pigs as the intermediate host. इंटरमीडिएट होस्ट जो है इस वायरस का वो कौन है? पिग्स है. फर्स्ट बट जो नेचुरल रिजर्वॉयर है वो आपका फ्रूट बैट है. The virus belongs to the Henipavirus genus of Paramyxoviridae family. So this family is important. Paramyxidae virus family है. Henipavirus genus है. This is not so important. The family you should know. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इट हैज द पोटेंशियल फॉर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन. अब ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन का भी पोटेंशियल रहता है इस वायरस में, निपा वायरस में, मेकिंग इट अ सीरियस हेल्थ थ्रेट दैट रिक्वायर्स रैपिड सर्वेलेंस एंड कंटेनमेंट. इट मेक्स इट अ सीरियस हेल्थ थ्रेट क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, नेक्स्ट, नाउ symptoms and clinical features. Nipah infection usually begins with influenza like symptoms. Influenza क्या होता है? Influenza is your common cold.
कॉमन कोल्ड को इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स कैसे रहते हैं? फीवर, मसल पेन, सोर थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। सो इट मे गेट कंफ्यूज्ड विद कि पर्सन इज इन्फेक्टेड विद कॉमन कोल्ड व्हाइल एक्चुअली द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद नीपा वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। In severe cases, it can progress to acute encephalitis. Encephalitis is your inflammation of the brain, tissue of brain जो होता है that gets inflamed, that is known as encephalitis. Itis जहाँ भी आ जाता है ना, this term itis. Itis means inflammation. Encephalus is a part of brain. ब्रेन का एक पार्ट होता है एनकेफेलस रीजन, ठीक है। जब उसका इन्फ्लेमेशन होता है दैट इज नोन एज योर एनकेफेलाइटिस। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। क्रॉनिक क्या होता है? क्रॉनिक इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। So now, in severe cases, it can progress to acute encephalitis, now which leads to convulsions, disorientation, coma, and even death. ठीक है। कन्वर्शंस क्या होते हैं? सीजर्स होते हैं, डिसोरिएंटेशन कि प्लेस एंड टाइम का पता नहीं लगता पर्सन को, देन कोमा इज योर स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड इवन डेथ। So these are some of the serious symptoms that can result from Nipah virus infection. Now next, importantly, asymptomatic infections are also reported, complicating the containment efforts. ठीक है। Next, treatment and prevention. There is no approved vaccine for Nipah viruses in humans or animals. As of now, अभी तक कोई भी approved vaccination we have not been able to develop. ठीक है? Treatment relies on intensive supportive care and isolation. यही treatment रहता है कि supportive care और isolation कर दो patient को. India, particularly Kerala, has improved outcomes by using antibiotics and antiviral drugs. बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स का रोल रहता है इसमें। इंडिया एंड नीपा आउटब्रेक्स, कुछ प्रीवियस आउटब्रेक्स दिए गए हैं इसमें। इंडिया हैज विटनेस नीपा आउटब्रेक्स इन वेस्ट बंगाल 2007 में, एंड केरला में कब कब विटनेस हुआ? 2018, 23, 25, making early detection, contact tracing, and rapid medical response critical for public health preparedness. Okay? These are some of the steps which have been taken to make this virus ineffective in spreading. Now, coming on to the article says the health department in Kerala is maintaining maximum vigilance and taking all possible preventive measures to ensure the current Nipah outbreak in Kozhikode, Kozhikode is a part of Kerala, it is a city in Kerala, is contained and that no nosocomial or human to human infection of the virus occurs. तो basically बात की है कि केरला स्टेट कैसे कैसे इंटरवेंशन कर रहा है इस वायरस को कंटेन करने के लिए, ठीक है। Now, इसमें term mentioned है that no nosocomial infection transmission occurs. Nosocomial होते हैं hospital acquired infection. Basically, a patient has been admitted for some other purpose in the hospital. वहाँ पे पास में कोई निपा वायरस का पेशेंट है, कुछ infected bed sheets अगर share हो गई या some of the articles of the patients are shared, the virus can get transmitted from one person to another. So that infection which gets transmitted in the hospital settings itself is known as your nosocomial infection. तो नीपा वायरस वैसे स्प्रेड हो सकता है। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि इसका हॉस्पिटल एक्वायर्ड स्प्रेड ना हो, केरला गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप, ये चीज दी गई है इसमें। नेक्स्ट, the rapid response team in Kozhikode has met and adequate stocks of personal protection equipment and medicines were being made available. So जो important stockpile की चीजें हैं वो देखी जा रही हैं, ठीक है। A control room has been opened at Kozhikode District Medical Administration's office. Control room setup हो जाता है किसी भी emergency condition में, so that also has been opened up. नेक्स्ट आते हैं इस पे। दिस इज सम समरी ऑफ नीपा वायरस। व्हाट इज नीपा वायरस? So NIV infection is a newly emerging zoonosis that causes severe disease in both animals and humans. If a statement comes that it infects only humans, the statement is wrong because it infects both animals as well as humans. Okay? The first outbreak was reported in Malaysia. Fruit bats are the natural hosts of NIV. Okay? Fruit bats. Okay, this you should remember. Now, how it is transmitted? See, this is the natural host, which is the fruit bats. This is an infected person. कहाँ से इसको infection हो सकता है? एक तो directly fruit bat से हो सकता है by consuming the fruits eaten by the infected bats and birds. ठीक है, infection can occur. Second of all, pigs से हो सकता है. Transmission of NIV to humans may occur after direct contact with infected bats and pigs. पिग्स उसका सेकेंडरी होस्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ठीक है।
थर्ड किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद अदर एनआईवी इन्फेक्टेड पीपल. So there are three ways by which this infection spreads. Now we'll come on to one question which is related to the article only. Try to answer this. Which of the following is a primary natural host for the Nipah virus? You have read about this now. कि natural host इसका कौन होता है? Fruit bats होते हैं. इसको हम लोग flying foxes भी बोलते हैं. This is important. So fruit bats इसका reservoir होता है. I told you one more important point कि fruit bats और flying foxes are also the reservoir of Ebola virus. So this also you make sure that you remember. Okay, so the correct answer is B, fruit bats. I hope this article is clear. We'll move on to the next one. Modi tells states to harness the power of artificial intelligence and prepare for El Nino's impact. प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट्स को बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को हार्नेस करें फॉर व्हाट रीजन टू प्रिपेयर फॉर एल नीनोज इम्पैक्ट. नाउ व्हाट इज एल नीनो? एल नीनो इज बेसिकली अ ज्योग्राफिकल फिनोमिनन. यू मस्ट हैव रेड. एनसो के अंडर आता है. एनसो के टू पार्ट्स होते हैं. एनसो होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन. ठीक है, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ एनसो. इसके दो पार्ट्स होते हैं. एल नीनो, the second, the reversal of it is known as La Nina. Okay. So this year, the forecast have been कि this year is El Nino is here. ये आपस में रिपीट होते रहते, मतलब ऑल्टरनेट करते रहते. एल नीनो होता है कुछ साल, देन फॉर सम इयर्स देयर इज ला नीना. अभी पिछले 3 सालों में इट वाज अ ला नीना. ला नीना ट्रिपलेट ईयर्स बोलते हैं उनको कि ला नीना का फिनोमेनन देखा जा रहा था. एंड इस साल के लिए जो प्रेडिक्शंस है वो है कि एल नीनो विल डोमिनेट दिस ईयर. ठीक है, अब एल नीनो होता है क्या? लेट्स कम ऑन टू दैट. First, I'll show you what the article says. Prime Minister Narendra Modi on Thursday asked the states to balance the opportunities of artificial intelligence with safeguards against emerging social challenges. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से कुछ सोशल चैलेंजेस जो इमर्ज हो रहे हैं उनसे सेफ गार्ड हमें लेने हैं. ठीक है, सच एज साइबर फ्रॉड का भी मेंशन किया है. ठीक है, and drug abuse while warning of risk posed by El Nino conditions and calling for stronger water conservation measures. एल नीनो इवेंट्स में क्या रहता है कि रेनफॉल की जो क्वांटिटी होती है, रेनफॉल गेट्स लोअर. ठीक है, कम रेनफॉल होती है एल नीनो ईयर्स में. तो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स की भी बात की गई है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू. ठीक है, कब बोला था प्राइम मिनिस्टर ने ये? चेयरिंग द 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग. अब नीति आयोग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो वो मीटिंग जब चेयर कर रहे थे 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, उसमें उन्होंने ये सब मेजर्स की बात की है जिसमें कि एल नीनो की प्रिपेयरनेस बढ़ाने के लिए बात की है स्टेट्स के लिए. ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू व्हाट एल नीनो इज. दिस इज अ शॉर्ट, एनसो की ये वो है क्लासिफिकेशन है, एल नीनो एंड ला नीना. पहले ब्रीफली इनके बारे में देखते हैं क्या होता है एल नीनो एंड ला नीना. El Nino is a climatic pattern that describes the unusual warming of surface waters in the eastern tropical Pacific Ocean. Pacific Ocean का जो ईस्टर्न पार्ट है उसकी अनयूजुअल वार्मिंग देखी जाती है. ठीक है, नॉर्मली ये कंडीशंस नहीं होती. ला नीना जो होता है दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन का एग्जैजरेटेड वर्जन इज योर ला नीना. ठीक है, ये एल नीनो से ऑपोजिट होता है. नॉर्मल कंडीशंस जो होती हैं वो ला नीना से रिसेंबल करती हैं, बट जब कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं दे रिसेंबल एल नीनो. ठीक है, सो एल नीनो इज अ क्लाइमेटिक पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स वेयर दिस इज इंपॉर्टेंट इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक. इट इज द वार्म फेज ऑफ लार्जर phenomenon called as the insect. एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का पार्ट है ये एल नीनो. ठीक है, it occurs more frequently than the La Nina. This is also an important point. कि La Nina ज़्यादा frequent होता है या El Nino. So you have to make sure that you mark it correct कि El Nino is more frequent. La Nina is not so frequent. Okay? Now La Nina is a cool phase of ENSO. Is a pattern that describes the unusual cooling of the tropical eastern Pacific. नॉर्मली जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक वाटर्स होते हैं वो कूल ही रहते हैं, बट अगर उसकी अनयूजुअल कूलिंग हो जाए मोर देन द व्हाट हैपेंस नॉर्मली, दैट इज योर लानीना फिनोमेनन. ठीक है, लानीना इवेंट्स में लास्ट बिटवीन 1 and 3 years अनलाइक एल नीनो व्हिच यूजुअली लास्ट नो मोर देन अ ईयर. जो लानीना है ये प्रोलॉन्ग्ड फिनोमिनन होता है. 1 से 3 years के बीच में ये लाई करता है. लास्ट एपिसोड जो इसका था दैट लास्टेड फॉर 3 years. ठीक है, आई जस्ट टोल्ड यू इट वाज योर लानीना ट्रिपलेट बोलते हैं उसको. ठीक है,
Unlike El Nino which lasts no more than a year. ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? एल नीनो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बट ड्यूरेशन कम है। लानीना की फ्रीक्वेंसी कम है बट ड्यूरेशन ज्यादा है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। अब ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है कि एल नीनो में क्या होता है। नाउ दिस इज योर eastern part of Pacific Ocean. This is your western part of Pacific Ocean. Australia वाली side is the western part of Pacific Ocean. ये पेरू वाली साइड जो है साउथ अमेरिका वाली साइड, दिस इज योर ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। अब जिस टाइम पे एल नीनो होता है, व्हाट डिड वी रीड हियर? एल नीनो इज अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। वही चीज शो की गई है यहाँ पे, अनयूजुअल वार्मिंग है, वार्मर देन द एवरेज सी टेम्परेचर इज योर एल नीनो। अब ये जब वार्मिंग ज्यादा होती है, हेयर इज मोर रेनफॉल। ठीक है, वार्मिंग की वजह से ओशंस का वाटर ज्यादा इवेपोरेट होगा विच विल लीड टू मोर रेनफॉल इन दिस रीजन। ठीक है, वार्मर वाटर फ्लोज ईस्ट। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिवर्सल ऑफ कंडीशंस हो जाएंगी, यहाँ पे कूल सी टेम्परेचर्स हो जाएंगी और ड्रायर कंडीशंस होगी। यू नो, जहाँ पे ड्राई कंडीशंस होंगी, कूल सी टेम्परेचर्स होंगे, वहाँ पे वाटर इवेपोरेट नहीं करेगा एंड दिस रीजन्स बिकम ड्राई, यहाँ पे रेनफॉल कम हो जाती है। ठीक है, लेट्स सी ओवर हियर। एल नीनो की और ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई है। El Nino was first recognized by Peruvian fishermen off the coast of Peru as the appearance of unusually warm water. Peruvian fishermen ने ये चीज first time notice की थी that there is unusually warm water presence along the coast of Peru. The Spanish immigrants called it El Nino, meaning the little boy in Spanish. तो इसका जो असली मीनिंग होता है एल नीनो का, दैट इज द लिटिल बॉय। ठीक है, नाउ इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो। इम्पैक्ट क्या होता है? इंक्रीज्ड रेनफॉल, कन्वेक्शन अबव वार्मर वाटर्स, सरफेस वाटर्स ब्रिंग्स इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन। कहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी? जहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगी। इवेपोरेशन कहाँ पे ज्यादा होगी? जहाँ टेम्परेचर्स वार्म होंगे। कहाँ पे टेम्परेचर्स वार्म है? ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। Rainfall increases drastically in South America, contributing to coastal flooding and erosion. रेनफॉल ज्यादा हो गई जिसकी वजह से फ्लडिंग एंड इरोजन की कंडीशंस भी बन जाती हैं इन द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। एज एल नीनो ब्रिंग्स रेन टू साउथ अमेरिका। अब ये तो हो गई साउथ अमेरिका की बात की, वहां तो रेनफॉल ज्यादा हो गई, बट इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया रीजन्स में क्या होता है? इट ब्रिंग्स ड्रॉट्स टू इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि ड्राई कंडीशन है वहां पे। ठीक है, कोल्ड कंडीशन है जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट नहीं कर। These droughts threaten the region's water supplies as reservoirs dry and rivers carry less water. तो ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो जाती हैं। एग्रीकल्चर विच डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर इरिगेशन इज आल्सो थ्रेटन। एग्रीकल्चर भी थ्रेटन होगा, जब रेनफॉल कम होगी तब एग्रीकल्चर विल ऑब्वियसली बी अफेक्टेड होगी। Now, strong El Nino events contribute to weaker monsoons and even droughts in the India, Southeast Asia. तो इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इंडिया में भी मानसून्स वीक हो जाते हैं एंड ड्रॉट्स हो जाती है। किसकी वजह से? एल नीनो की वजह से। ओके, आई होप दिस इज क्लियर हियर। ठीक है, ज्योग्राफी में भी यू रीड अबाउट दिस बट आई हैव गिवन अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ओवर व्हाट एल नीनो इज। ठीक है, इसका बिल्कुल जो अपोजिट होता है, रिवर्सल होता है, दैट इज योर ला नीना कंडीशन। Now we'll come on to a question. Try to solve this prelims question. With reference to El Nino, consider the following statements. You have to tell how many of these statements are correct. So I tell you every time the first you have to notice कि यहाँ पे correct statements identify करनी है या incorrect statements identify करनी है. First you identify this thing in the question and then you will go towards the statements कि अब statements कौन कौन सी देखनी है, ठीक है? कैसे देखनी है हमें? तो El Nino के हिसाब से हमें देखनी है। First statement, in the case of India, El Nino is associated with a strong monsoon circulation. El Nino में monsoon strong हो जाते हैं? No, drought-like conditions होती हैं, monsoons कम हो जाते हैं. That is why Prime Minister has urged on towards water conservation efforts. So this statement is wrong. Second statement, La Nina brings good rainfall during the monsoon season. La Nina में rainfall ज्यादा होती है? Yes, La Nina is opposite of El Nino जिसमें की rainfall condition ज्यादा होती है. This is true. Now, third condition, third statement, El Nino accentuates the global warming phenomenon and contributes to climate change. एल नीनो में क्या होता है कि हीट की कंडीशंस बढ़ जाती हैं, ड्रॉट की कंडीशंस बढ़ जाती हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेंचुएट करेगा, यस, एंड कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। द स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। So how many of the above statements are correct? Only one, only two, all three, or none?
Its answer is only two statements are correct. Second and third statement are correct. First is wrong. Okay. So this is the answer. B statement is B option is correct. Okay. I hope this article is clear. We'll move on to the next one now. Bacillus dysentery cases rise in Kerala. This is yet another disease which we are going to cover in this session. Bacillus dysentery. इसके भी cases केरला में rise हो रहे हैं. Let's see what this is. Many cases of shigellosis. This is another name of Bacillus dysentery. Shigellosis, Bacillus dysentery, a highly contagious bacterial diarrheal disease. पहले हमने पढ़ा निपा विच इज अ वायरल डिजीज निपा वायरस है ठीक है अब ये जो है बैसिलस डायसेंट्री जिसको हम लोग शाइगेलोसिस भी बोलते हैं शाइगेला से इन्फेक्शन होता है इसका दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन यू हैव टू रिमेंबर दिस बैसिलरी डायसेंट्री बैसिलस इज अ फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस ठीक है बैसिलस होती है बैसिलस इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया वहां से इसका नाम आ रहा है बैसिलरी डायसेंट्री More cases of shigellosis, which is also known as bacillary dysentery, a highly contagious bacterial diarrheal disease caused by Shigella, have been reported across Kerala. Okay. Now, इन्होंने दिया है shigellosis is a severe definition दी है basically shigellosis या bacterial dysentery होता क्या है ठीक है it is a severe form of diarrheal outbreak involving intestinal tissue invasion जो आपके इंटेस्टाइन्स होते हैं इंटेस्टाइन्स आर पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें जो टिश्यू होता है उसकी इन्वेशन हो जाती है इस बैक्टीरिया के थ्रू ठीक है by the bacteria causing highly infectious bloody and mucoid stools now this is why it is known as bacillary dysentery ये इसके symptoms होते हैं causing highly infectious bloody stools and then they are mucoid stools mucoid होता है कि बहुत ज्यादा liquidy stools होते हैं ठीक है accompanied by high fever and severe abdominal cramps. Okay, the infection spreads through contaminated water. This is the mode of spread of infection. कि क्या-क्या routes होते हैं? The infection spreads through contaminated water, food, and contact from infected persons and or surfaces, and is extremely infectious. Ingesting as few as 10 to 100 bacteria can cause an infection. It spreads rapidly via the fecal route. This is important. Fecal route से spread करता है. Fecal मतलब कि feces के through. Oral is your through your mouth. Through contaminated food, contaminated water, this infection gets spread. Okay. Now we are coming on to the symptoms of dysentery. Dysentery भी बोलते हैं इसको bacillary dysentery. ठीक है. दूसरा नाम shigellosis. Shigellosis or bacillary dysentery, whatever you want to call it. Symptoms इसके होते हैं diarrhea containing blood or mucus, painful stomach cramps is abdominal pain, then you have high fever, nausea and vomiting, upset stomach and weight loss. So these are the symptoms. Okay? We'll do a question based on this article. Bacillary dysentery is caused by. Now you have to identify what is the causative agent of bacillary dysentery. We have read it right now. It is Shigella. Okay, so the answer is B, Shigella. Now let's move on to the next article. This is an economics article. Center lifts excise duty on higher ethanol blended petrol. सेंटर ने क्या किया है एक्साइज ड्यूटी वेव ऑफ कर दी है किस पे वेव ऑफ की है हायर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल व्हिच इज आल्सो नोन एज ईबीपी इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग चल रही है आज यू नो पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो थी 20% of ethanol blending was a target till 2030 but India achieved it earlier कब अचीव कर लिया था 2025 में अचीव कर लिया था 20% का टारगेट now the next target is for enhanced target है 2027 के लिए टारगेट्स दे दिए गए हैं कि 25% एंड मोर ब्लेंडिंग हमें अचीव करनी है ठीक है दिस इज द now the article says union government exempt मतलब waive off किया है E22, E25, E27 एंड E30 वेरिएंट्स ये वेरिएंट्स है परसेंटेज वाइज कितनी ब्लेंडिंग हुई है इथेनॉल की पेट्रोल में परसेंटेज वाइज वहां से इसकी नेमिंग आती है E22 मतलब 22% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल
25 is a 25% blending, and so on and so forth. Okay. Variants from central. So Union government has exempted these all variants from central excise duty. In पे excise duty नहीं लगेगी. Clarifies that the latest reduction does not indicate anything on rolling out higher blends. ये भी क्लैरिफाई किया साथ में कि अभी हाल फिलहाल में ये जो हायर ब्लेंड्स है इनको रोल आउट नहीं किया जाएगा, बट इवेंचुअली दे विल बी रोल्ड आउट. ओके. The move is a preliminary prerequisite event for eventually introducing higher blends, the government clarified. ठीक है, eventually roll out हो जाएंगे, but not in the very near future. So let's see what they are saying. Following the move, petrol blended with ethanol at 22%, 25%, 27% and 30% would be exempted from central excise duty. Central excise duty इस पर नहीं लगेगी. Now see, petrol bears excise duty and ethanol bears GST at their respective stages. जब जब प्रोडक्शन होती है, जैसे पेट्रोल की प्रोडक्शन है, का मतलब कि रिफाइनमेंट हुई बेसिकली, उस पर कौन सी ड्यूटी लगती है? एक्साइज ड्यूटी लगती है. एंड इथेनॉल पे कौन सी लगती है? इथेनॉल जो ब्लेंडिंग के लिए यूज होता है उस पर लगती है आपकी जीएसटी लगता है एट द रिस्पेक्टिव स्टेजेस. When the two are blended, the resulting product may attract excise duty once again on the full quantity. पहले जब दोनों इंडिविजुअली प्रोड्यूस होंगे तब उन पे टैक्सेस लग रहे हैं. जब वो ब्लेंड कर दिया, आपस में दोनों को ब्लेंड कर दिया, तब भी वो कह रहे हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी. बट इस चीज को वेव ऑफ किया गवर्नमेंट ने. For ethanol blends of petrol up to 20%, excise duty on blended petrol was exempted by the Ministry of Finance. The exemption ensures that the duties already paid are not charged a second time on the blend. अब इस चीज को इंश्योर किया गया कि दो दो बार उस पे ड्यूटीज ना लगे, सिर्फ वंस ओनली द ड्यूटीज विल बी levied on those things. Okay. Now let's see something about ethanol blending program. India's ethanol blending program mixes ethanol with petrol to reduce. क्यों कर रहे हैं बेसिकली? इसका एम क्या है इस प्रोग्राम का? इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में क्यों कर रहे हैं? ठीक है, टू रिड्यूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स. इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ क्रूड ऑयल इज इंपोर्टेड इन इंडिया. Some reports say it is 85 to 90% of crude oil being imported in the country. So you see how much is our import dependence. अब इस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इथेनॉल ब्लेंड कर देते हैं पेट्रोल के साथ में. लोअर कार्बन एमिशंस भी इससे कम होते हैं एंड बूस्ट फार्मर्स इनकम्स. फार्मर की इनकम कैसे बूस्ट होगी? क्योंकि इथेनॉल कहाँ से आता है? फार्म्स में से यार बेसिकली शुगर केन के थ्रू हम लोग प्रोड्यूस करें या फ्रॉम सम अदर क्रॉप्स. To achieve ahead of the schedule, India maintains 20% ethanol E20 blending in petrol and is targeting even higher blends up to 27% by 2030. So these are the targets for 2030 कि 27% blending we have to achieve by 2030. These are the revised targets क्योंकि 20% की हमने already achieve कर ली है before the targeted time. Okay. Now, some things about what is ethanol. Ethanol is a renewable plant-based bioalcohol produced via fermentation of sugars or starches or petrochemical processes. तो बेसिकली फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है. किसकी फर्मेंटेशन? शुगर या स्टार्च की फर्मेंटेशन के थ्रू या फिर पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है. इट इज अ बायो एल्कोहल. ओके, दिस इज इथेनॉल. Now, what are the generations of biofuel? This is also important. 1G generation, 2G, 3G, and 4G. अब ये होते क्या है? First generation, second generation, third generation, and fourth generation. 1G is derived from food crops. Directly हम लोग food crops से जो derive करें, that is a first generation biofuel. कौन से food crops से? Sugarcane, maize, surplus food grains. तभी कह रहे हैं कि farmers will also get benefited from this initiative. Okay. Now 2G petrol is derived from agricultural residues. कौन से residues होते हैं? Stubble, bagasse, woody biomasses. अब हम 1G से 2G पे क्यों shift करें? For our food safety, basically, so that food की supplies हमारे लिए limited ना हो जाए. ठीक है, उसको इंश्योर करने के लिए we are shifting from 1G to 2G, जिसमें कि agricultural residues use होते हैं. Stubble, bagasse, stubble, you know ना, राइस से जो होता है लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द राइस क्रॉप्स योर स्टबल. बिगैसे इज द रेजिड्यू ऑफ योर शुगर्स. ठीक है, शुगर केन का रेजिड्यू होता है. जब शुगर केन की प्रोसेसिंग होती है उसमें जो रेजिड्यू बचता है दैट इज वन ऑफ द रेजिड्यू इज बिगैसे. देन यू हैव द वुडी बायोमास. इन सबसे 2G हमारा बायोफ्यूल प्रोड्यूस होता है.
Then 3G and 4G is derived from aquatic biomass is LB and genetically engineered microorganisms. यहाँ तक अभी हम पहुंचे नहीं. ठीक है, 1G और 2G में ही है इंडिया अभी. We are trying to move towards 3G also. For our food security reasons, not food safety, these are your food security reasons. Okay, so that food security हमारी ensured है. Now this is one prelims question related to ethanol blending. With reference to ethanol blending, consider the following statements and you have to see how many of the above statements are correct statements. So the first statement is India has only achieved a 30% blend under its ethanol blended program. 30% blend India ने achieve कर लिया? No, India has not achieved 30% blend as of now. 20% India ने achieve कर लिया है. Next target हमारा 27% का है जो कि 2030 तक का. Okay, so this statement is wrong. The second statement now, India doesn't have enough fermentation capacity required to make ethanol. Unfortunately, this statement is also true. India के पास अभी इतनी enough fermentation capacity नहीं है कि ethanol की production अच्छे scale पे हो सके. Third statement, ethanol has less energy than petrol. The statement is also true and this is an important statement कि ethanol की जो energy होती है वो petrol से कम होती है but carbon emissions कम होते हैं इसके petrol से. ठीक है, एनर्जी भले ही कम हो बट कार्बन एमिशंस भी कम होते हैं. So how many statements are correct? Second and third statement is correct. You have the option C as the answer, 2 and 3 only. Okay. I hope this is clear. We'll move on to the next article now. This article is from your art and culture part. Basically history का part है. Odisha students take Shakespeare in Santali to Romania. Santali is a language. Now ओडिशा के कुछ स्टूडेंट्स ने शेक्सपियर के कुछ प्लेस को प्रमोट किया इन द लैंग्वेज संथली इन रोमानिया. Okay, now let's see this. This article is important because of this language Santhali. We read more on this. A group of students from Odisha performed Shakespeare plays in Santhali at the International Shakespeare Festival 2026 in Romania, marking the 100th year of Portuguese script of the tribal language. तो ये जो स्क्रिप्ट है इस लैंग्वेज की ओल्ड की स्क्रिप्ट ऑफ संतली लैंग्वेज इसका 100th ईयर मार्क कर रहे हैं हम लोग इस साल 2026 में. दिस इज व्हाई दिस आर्टिकल बिकम्स इम्पोर्टेंट. यू नो यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. अगर कोई स्कीम के 10 इयर्स कंप्लीट हो गए या फिर कोई इवेंट या इंसिडेंट को 100 इयर्स हो गए हैं, सेंटिनरी हो गई है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते होते हैं एग्जाम में. दिस इज व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके. The Santali language is spoken by roughly 7.6 million people across India. So it is not just limited to India. You see how many countries are being covered. India, Bangladesh, Nepal and Bhutan. अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि संतली लैंग्वेज इज नेटिव टू इंडिया, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि ये बाकी कंट्रीज में भी बोली जाती है इन द नेबरहुड ऑफ इंडिया. It has been officially recognized a scheduled language of India. 22 scheduled languages हैं जिसमें से कि एक recognized language संतली है. This is why also it is an important language. कब recognize हुई थी? 2003 में recognize हुई थी via the 92nd Amendment and serves as an additional official language in states such as official language भी serve करती कौन कौन से states की? झारखंड and West Bengal. So this is also an important point. The Olchiki script of the Santali language marks its centenary in 2026. Centenary is a period of 100 years in 2026. In 1925, now this point is also important. 1925 में किसने बनाई ये language? Guru Gomke Pandit Raghunath Murmu from Odisha's Mayurbhanj district developed this script. ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हैं कौन? गुरु गोमके पंडित. He developed this script of Olchiki. He created the distinct 30-letter writing system. This is a 30-letter writing system specifically for the Santali language to accurately capture its unique phonetic feature. So this is an article. Now we'll do a question related to this. With reference to the Santali language, consider the following statements. ये 3 statements आपको दी हैं. You have to identify which of the statements given above are correct. First statement, it belongs to the Austroasiatic language family. So this piece of information has not been covered in the article, but this is a true fact. It belongs to the Austroasiatic language family, this Santali language.
This is an additional fact that I have covered through the question. Second thing, it is the only language from the Austroasiatic family included in the eighth schedule of the Indian Constitution. This is also very important point and this is correct. इट इज द ओनली लैंग्वेज सिर्फ ये इकलौती लैंग्वेज है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से जो कि एक शेड्यूल में इंक्लूड की गई है ठीक है थर्ड स्टेटमेंट द लैंग्वेज इज प्राइमरीली रिटन इन Polchiki script which was developed by Pandit Raghunath Murmu. The statement is also correct. Okay, so which of the following statements are correct? The answer is 1, 2, and 3. All three are correct. Now, some additional information related to first and second statement. Santali is a prominent language of Munda subgroup. Munda subgroup की prominent language है within the Austroasiatic language family, spoken primarily by the Santal people in states like Odisha, Jharkhand, West Bengal, and Bihar. Second statement says Santali was added to the 8th schedule of the Indian Constitution by the 92nd Constitutional Amendment Act of 2003. This you have to remember. It remains the only Austroasiatic language currently listed in the 8th schedule. Also important. Third statement, which we have read, the Olchiki script, specifically designed for Santali language, was created by Pandit Raghunath Murmu in 1925. It is a distinct alphabetic script that does not derive from the Devanagari or Brahmi script. तो अगर क्वेश्चन आता है कि it derives its origin from Devanagari or Brahmi script, the statement is false because it does not derive its origin from that. Okay. So this was about this article. Now we come on to the next article. Should India incentivize bigger family? This is the article कि now इसका कुछ background दे देती हूँ मैं कुछ context दे देती हूँ. In 2025, India became the largest populated country in the world, surpassing China. China की population को भी surpass कर दिया इंडिया ने, and it became the largest populated nation of the whole world. ठीक है. अब क्या हो रहा है बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट टीएफआर लेवल जो होते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट्स जो होते हैं किसी भी नेशन के जब तक टीएफआर लेवल्स हमारे 2.1 या 2.1 रहे दिस इज अ रिप्लेसमेंट लेवल मतलब कि पॉपुलेशन हमारी स्टेबल रहती है टीएफ अगर हमारा टीएफआर लेवल 2.1 है दैट मीन्स योर पॉपुलेशन इज करंटली स्टेबल पॉपुलेशन जितने बर्थ रेट हो रहा है उतना ही डेथ रेट हो रहा है दैट इज अ बैलेंस्ड अगर हमारा टीएफआर 2.1 से ज्यादा होता है in that case you have a population that is growing in number ठीक है बढ़ रही है आपकी population अगर TFR से 2.1 से ज्यादा है नेक्स्ट थिंग अगर TFR 2.1 से कम है उस केस में यू हैव अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पॉपुलेशन आपकी कम हो रही है श्रिंकिंग पॉपुलेशन है बेसिकली बर्थ रेट्स कम होंगे इन कंपैरिजन टू योर डेथ रेट ठीक है आपकी ओल्ड एज की तरफ जा रही है वो पॉपुलेशन Okay, now let's read about the article. What does the article say? For decades, Indian policymakers have encouraged population control. अब बहुत टाइम से इंडिया में क्या रहा है पॉलिसी मेकर्स का रवैया क्या रहा है बेसिकली उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को एनकरेज किया है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी टीएफआर रेट्स बहुत ज्यादा थे वी हैड एन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन which was limited by India's resources. इंडिया के रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं थे जितनी ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन For decades, Indian policymakers have encouraged population control with the familiar slogan of "हम दो हमारे दो, we two are two." ये स्लोगन रहा है इंडिया के पॉलिसी मेकर्स का फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम ओके However, the recent drop in India's total fertility rate अब रिसेंटली इंडिया के फर्टिलिटी रेट्स 2.1 से भी ड्रॉप करके 2.0 और सम से 1.9 तक आ गए हैं ठीक है तो टीएफआर हमारा कम हो रहा है बेसिकली वी हैव अ श्रिंकिंग पॉपुलेशन नाउ दिस इज द कंसर्न The average number of children a woman would have in her lifetime, this is the definition of TFR, total fertility rate, has now dropped to 1.9. 1.9 पे आ गया हमारा TFR, below the replacement rate of 2.1. I have just explained this कि replacement rate क्या होता है 2.1. With some southern states seeing their TFR drop to 1.3. कुछ southern states में TFR has come to as low as 1.3. Last month, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए टीएफआर जहाँ पे कम हो रहा है उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए लास्ट मंथ क्या किया है क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किया है आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू announced cash incentives of rupees 30,000 and rupees 40,000 to women having their third and fourth child respectively in a bid to reverse that trend.
बेसिकली हमारा जो टीएफआर रेट्स हैं वो फॉल कर रहे हैं, सदर्न स्टेट्स में ज्यादा फॉल कर रहे हैं। उस चीज को रिवर्स करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, कैश इंसेंटिव्स देने स्टार्ट किए हैं उन वेमेन को जिनके थर्ड और फोर्थ चिल्ड्रन होते हैं, 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, उनको कैश इंसेंटिव्स देने स्टार्ट किए, बेसिकली टू प्रमोट इंक्रीजिंग लेवल इन द पॉपुलेशन। क्यों चाहिए पॉपुलेशन ज्यादा? वी हैव बीन ट्राइंग टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, व्हाई डू वी नीड टू हैव अ पॉपुलेशन व्हिच इज इंक्रीजिंग? अगर पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी हमारी, वी वोंट बी एबल टू रीप आउट द डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम लोग हमारे पास में वर्क फोर्स कम होगी बेसिकली, ठीक है। नाउ दिस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टेट्स आर एनकरेजिंग द रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड ऑफ फॉलिंग टीएफआर लेवल्स, ठीक है, उस चीज को रिवर्स करने के लिए इंसेंटिवाइज करते हैं लोग, ठीक है। See this now. Social and demographic transformations are complex phenomena. Social and demographic transformation होती है, demographic means डेमो मीन्स पॉपुलेशन से रिलेटेड ग्राफ इज योर स्टडी। तो पॉपुलेशन में जो जो ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं, सोसाइटी में जो जो ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एंड गो हैंड इन हैंड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी बढ़ती है, वी सी अ डिक्लाइन इन दिस डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, पॉपुलेशन डिक्रीज करती है हमारी। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, एजुकेशनल डेवलपमेंट होती है, सोसाइटल डेवलपमेंट होती है, बेसिकली वुमेन गेट मोर अवेयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, तो पॉपुलेशन लेवल्स ऑटोमेटिकली गो टू a decline. Historically, with a certain level of social and economic development, the fertility rate drops. ठीक है, कुछ एक सर्टेन लेवल अगर होगा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो हमारे फर्टिलिटी रेट कम होते हैं इस कंट्री। I have covered this article in yesterday's newspaper also related to demography. You can refer to that one also. Okay. Now, to understand this topic better, I have inculcated a UPSC mains practice question. ठीक है, मेंस का एक क्वेश्चन देखेंगे, I have solved it for you, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग ये आंसर देखेंगे, ठीक है, ये टॉपिक को और अच्छे तरीके से करेंगे। इज द क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। With India's total fertility rate falling below the replacement level of 2.1, इंडिया के fertility rates 2.1 से कम हो रहे हैं, अभी क्वेश्चन में खुद ही दे दिया गया है। A debate has emerged regarding the shift from population control to population stabilization. जो हम इतने टाइम से पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स पे काम कर रहे थे, हम जो हमारे दो के स्लोगन के साथ में, नाउ दैट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, कि हम लोग टीएफआर लेवल्स को एटलीस्ट 2.1 पे मेंटेन करके रखें सो दैट वो फॉल ना करें, क्योंकि हमने देखा कुछ सदर्न स्टेट्स में इट हैज गॉन टू एज लो एज 1.3, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट क्रिटिकली एग्जामिन में आपको दोनों पॉइंट्स देने होते हैं, इन द कंटेक्स्ट पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, ठीक है। The feasibility, moreover, negative points ज्यादा देने होते हैं, ठीक है। The feasibility and implications of incentivizing larger families in India. तो बेसिकली हमें क्या एग्जामिन करना है कि implications क्या होंगे लार्ज फैमिलीज को इंसेंटिवाइज करने के। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 30 to 40,000 रुपीज बोले हैं टू द women who will give birth to third और fourth child, उस केस में। तो इन्होंने बोला है कि अगर हम एक लार्ज फैमिलीज को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और उसकी फिजिबिलिटी कितनी ज्यादा है, ठीक है। डू यू थिंक सच फिस्कल इंसेंटिव्स कैन इफेक्टिवली एड्रेस द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक एजिंग? बेसिकली डेमोग्राफिक एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए स्टेट्स ये स्टेप्स ले रहे हैं कि हमारी ओल्ड एज की जो पॉपुलेशन है, दैट शुड नॉट ओवरपावर द वर्किंग एज पॉपुलेशन, अदरवाइज इट विल बिकम अ बर्डन ऑन देम। इस चीज को रिवर्स करने के लिए स्टेट्स क्या कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग, डू यू थिंक सच फिस्कल इंसेंटिव्स, ऐसे फिस्कल इंसेंटिव्स कैन इफेक्टिवली एड्रेस द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक एजिंग? क्या इससे सच में ये डेमोग्राफिक एजिंग के चैलेंजेस जो हैं वो हम लोग एड्रेस कर सकते? तो दिस इज द क्वेश्चन, 250 वर्ड्स में लिखना है आंसर, दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन है, और द क्वेश्चन इज क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू मेक श्योर दैट द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर इन योर माइंड बिफोर राइटिंग द आंसर, ठीक है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि पूछ क्या रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं, यू हैव टू राइट द आंसर इन दैट वेरी कंटेक्स्ट में, ठीक है। हम लोग फॉर्मेट के थ्रू इसको आंसर करेंगे। एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कोई भी मेंस आंसर राइट करने का, दैट इज योर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये 3 पार्ट्स रहते हैं।
ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में आंसर करेंगे, बट व्हेन यू राइट द आंसर यू डोंट हैव टू गिव दीज हेडिंग इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये मैंने अभी आपके रेफरेंस के लिए दिया, दिस इज योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, 250 वर्ड्स का आंसर है ना बेसिकली, कि से कि 50 वर्ड्स की आपकी इंट्रोडक्शन रहेगी, देन 50 वर्ड्स का कंक्लूजन रहेगा, देन द रिमेनिंग 150 वर्ड्स आपकी बॉडी में होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज अ कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप कंटेक्स्ट दे सकते हो, किसी भी जो भी आपको क्वेश्चन पूछा हो वो किस कंटेक्स्ट में पूछा है, उससे रिलेटेड रिसेंट न्यूज क्या है, वो सब आप लिख सकते हो। आपको कोई स्टैट्स एंड फिगर्स पता है इकोनॉमिक्स में, आप वो लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। So let's see what they are saying in the introduction. Introduction में है, India is currently witnessing a significant demographic transition. We are witnessing a demographic transition. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, आपको डेटा कोट करना है कि कहाँ से आपने लिया है, ये उसके सोर्सेस कोट करने हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का फिर उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट हैज डिक्लाइन टू 2.0। अभी जो रिसेंट आर्टिकल है उसमें हमने देखा 1.9 तक भी डिक्लाइन कर गई है कुछ रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग, बट जो एनएफएचएस फाइल हुआ है उसमें 2.0 पे रही है, विच इज ऑल्सो बिलो द टीएफआर लेवल ऑफ total fertility rate level of 2.5, okay, which is the replacement rate, effectively falling below the replacement rate of 2.1. While this marks a successful culmination of decades of population stabilization efforts, क्या कह रहे हैं कि हालांकि दिस एफर्ट इज इंडिकेटिंग दैट जो भी हमारे इतने डिकेड्स से हमारे जो एफर्ट चल रहे थे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के, वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव नाउ लो टीएफआर लेवल्स, बट इट हैज स्पार्क्ड द पॉलिसी डिबेट। अब कौन सा पॉलिसी डिबेट स्पार्क किया है उसने, whether the nation should pivot is whether it should change its position from incentivizing smaller families to encouraging larger ones। अब हम लोग अपनी पोजीशन तब से जो इंसेंटिवाइज कर रहे थे वो स्मॉलर फैमिलीज को इंसेंटिवाइज कर रहे थे कि हम दो हमारे दो, दो से ज्यादा हम लोग बच्चों को इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे थे, प्रमोटिंग दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। बट द डिबेट लाइज ऑन दिस क्वेश्चन कि वेदर द नेशन शुड पिवट फ्रॉम इंसेंटिवाइजिंग स्मॉलर फैमिलीज, क्या हमें ये शिफ्ट लेना चाहिए कि जहाँ पे हम लोग स्मॉलर फैमिलीज को इंसेंटिवाइज कर रहे थे, अब उसकी जगह वी आर ट्राइंग टू encourage the larger ones to mitigate the future impact of a shrinking workforce and an aging population. So this is the debate that the question addresses. Okay. Now we'll come on to the body. The feasibility of incentivizing larger families is complex and fraught with structural challenges. क्योंकि हमें critically examine करने को कहा है, तो हम लोग challenges examine करें basically इस approach के challenges क्या होंगे जिसमें हम लोग larger families को incentivize कर रहे हैं कि हमारे birth rates ज्यादा हो, उस चीज को हम लोग promote करें, इसके challenges क्या होंगे हमारे। ठीक है, so in the body I always prefer that you should write in point format, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। एंड जब पॉइंट्स में लिखोगे उसको सब हेडिंग्स बना के लिखो, सी आई हैव मेड दी सब हेडिंग्स, इसको अंडरलाइन किया। ठीक है, व्हाइल राइटिंग एन आंसर यू शुड आल्सो ट्राई टू कॉपी दिस अप्रोच बेसिकली, कि सब हेडिंग लिखो उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, सब हेडिंग एंड अंडरलाइन, देन यू राइट सम 2-3 लाइंस एक्सप्लेनिंग दैट सब हेडिंग। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना है एंड सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है, दिस इज योर बॉडी। ठीक है, अब करते हैं क्या चैलेंजेस हैं। The structural challenges first is limited impact of fiscal incentives, कि जो भी हम लोग monetary incentives provide करेंगे, cash based incentives provide करेंगे, वही होते हैं ना fiscal incentives, उसका limited impact रहेगा। कैसे, एग्जाम्पल्स दें, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने हैं थिंग्स। ओके, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया एंड जापान। साउथ कोरिया और जापान के जो फर्टिलिटी लेवल्स हैं, टीएफआर लेवल्स हैं, वो बहुत कम है इस टाइम। I have covered it in the previous article in yesterday's session. Okay, refer to that before you come on to this one. Okay, international experiences from countries like South Korea and Japan suggest that purely fiscal interventions such as cash transfers or subsidies, क्योंकि साउथ कोरिया और जापान ने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस की हुई है, तो हम लोग उनके एक्सपीरियंसेस से क्या सीखते हैं कि जो प्योरली फिजिकल इंसेंटिव्स होंगे जैसे कि कैश ट्रांसफर्स हो गए या सब्सिडी हो गई, दे रेयरली सक्सीड इन रिवर्सिंग द फर्टिलिटी ट्रेंड्स। उससे जो हमारे फर्टिलिटी ट्रेंड्स हैं वो रेयरली रिवर्स होते हैं, बहुत कम मायने में रिवर्स होते हैं। These measures often fail to address the root causes of the low fertility trap.
ये जो मेजर्स हैं फिजिकल इंसेंटिव्स के, ये लो फर्टिलिटी ट्रैप को इतने अच्छे से एड्रेस नहीं करते हैं, उसके रूट कॉजेज को बहुत ज्यादा अच्छे से एड्रेस करने में कामयाब नहीं है, which include high costs of living, intense educational competition and career aspirations. इसमें कह रहे हैं कि लो फर्टिलिटी ट्रैप इसलिए है, लो फर्टिलिटी ट्रैप की प्रेवलेंस क्यों है इस टाइम पे इतनी ज्यादा ग्लोबली. These are the factors which include high cost of living, cost of living बढ़ते जा रहे हैं, intense educational competition है, you know how much competition is there right now, okay, and career aspirations. ये सब चीजों की वजह से आपके फर्टिलिटी रेट्स फॉल कर रहे हैं. ठीक है, तो अब इसमें आप फिजिकली इंसेंटिवाइज करोगे उनको 30 या 40,000 रुपीज देके, इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. ठीक है, नाउ दिस वन फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. विल मूव ऑन टू द सेकंड वन. स्ट्रक्चरल सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. अलग अलग डायमेंशन से आपको आंसर लिखना है. फर्स्ट यू कवर्ड दिस फिजिकल इंसेंटिव्स, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है, अलग अलग हेडिंग्स देनी है, डाइवर्स डायमेंशंस कवर करनी है. Okay, structural socio-economic factors में क्या है कि fertility decline in India is inextricably linked to female empowerment, better access to education and urbanization के factors हैं जिसकी वजह से इंडिया में जो है fertility rates decline किए हैं, female empowerment हुई है, access to education better हुआ है females को, and urbanization हुई है, job opportunities मिली हैं females को, ज़्यादा reproductive autonomy ज़्यादा है उनकी. This is why the fertility rates in India are decreasing right now. In many Indian households, the transition is driven by a preference for quality of investment, healthcare and education for children over quantity. बहुत सारे households में they are stressing upon quality as compared from quantity in their perspective of their children. ठीक है, पहले क्या होता था कि people used to prefer to quantity, कि we'll have 6 to 7 children, उसमें से जो भी healthy निकले we'll raise them up, क्योंकि they use तब हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी. पीपल यूज टू कंसिडर कि हाँ एक दो बच्चे इफ दे गेट डिजीज और दे डाई इन द प्रोसेस, वी विल हैव 4 to 5 चिल्ड्रन हु विल हेल्प अस विद अर्निंग द मनी. दे दे यूज टू थिंक कि जितने ज्यादा हाथ होंगे कमाने वाले उतना ज्यादा विल बी एबल टू अर्न. दैट इज द थिंग. ओके, द ट्रांजिशन इज ड्रिवन बाय, बट नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्वालिटी, कि जितने हम लोग बच्चे पैदा करें एक या दो, उनकी क्वालिटी हमें इम्प्रूव करनी है, उनके लाइफस्टाइल को बेसिकली उनको हमें रेज अप प्रॉपरली करना है. ठीक है, हेल्थ केयर बेटर प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन बेटर प्रोवाइड करनी है. Policies attempting to reverse this could inadvertently undermine women's economic participation and agency. Now you start seeing the other side of this, कि अब तुमने incentivize करना शुरू कर दिया, पैसे देने शुरू कर दिए उन लोगों को कि 30 या 40,000 आपको देंगे. Now this could basically reverse the women's economic participation and agency. अब जो भी women के rights हैं उसको रिवर्स करने की क्षमता रखते हैं. ठीक है, this very step of incentivizing via fiscal incentives. Now we'll come on to the next point. That is the third point, is your regional heterogeneity. Heterogeneity क्या होता है? Diverseness. India is not a monolith. एक सिंगल तरह के लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे. While southern states like Kerala and Tamil Nadu face the challenges of an aging population. Southern states में there is a problem of aging population now, TFR levels कम हो रहे हैं, but they are saying कि northern states like Bihar and UP still maintain higher fertility rates. बिहार और यूपी में अभी भी fertility rates ज़्यादा ही हैं. A uniform national policy to incentivize larger families. अगर हमने एक national policy बना दी जो कि लार्जर फैमिलीज को इंसेंटिवाइज कर रही हैं, दैट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव एंड इल सूटेड टू द कंट्रीज डाइवर्स डेमोग्राफिक लैंडस्केप. तो हम लोग एक नेशनल पॉलिसी क्यों नहीं बना सकते इसको लेके कि लार्जर फैमिलीज आपको इंसेंटिवाइज करनी है, क्योंकि सदर्न स्टेट्स में जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, दैट इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्टेट्स. नॉर्दर्न स्टेट्स में अभी भी फर्टिलिटी रेट्स बहुत ज्यादा है, वाइल सदर्न स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट्स कम है. तो हम एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ रीजनल हेट्रोजिनिटी, क्योंकि रीजन्स के हिसाब से डिफरेंसेस हैं. ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज एड्रेसिंग द डेमोग्राफिक एजिंग. Relying on increased birth rates to solve the aging problem is a long-term uncertain strategy. बेसिकली हम लोग बर्थ रेट्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं ना इस चीज से, बट दे आर सेइंग कि रिलाइंग ऑन इंक्रीज बर्थ रेट्स, अगर हम सिर्फ इसी चीज पे रिलाई करते हैं एजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, दिस इज इन अ लॉन्ग टर्म अनसर्टेन स्ट्रैटेजी, जिसमें ज्यादा हम लोग श्योर नहीं है इसके बारे में.
By the time a child born today enters the workforce, the immediate economic strain on silver economy will have already peaked. वो कह रहे हैं कि अभी के लिए अगर हमने इंसेंटिवाइज कर भी दिया तो जो हमारे अभी जो ओल्ड एज वाली पॉपुलेशन होगी दैट विल हैव ऑलरेडी पीक्ड बाय देन। जब तक वो लोग वर्कफोर्स में एंटर करेंगे, जब तक जो अभी जो पैदा हुए बच्चे वर्कफोर्स में एंटर करेंगे, उस टाइम पे हमारी सिल्वर इकोनॉमी की ऑलरेडी पीक आ चुकी होगी, तो इस चीज का कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। राइट नाउ क्योंकि इंडिया इज इन फेज ऑफ डेमोग्राफिक बूम, बेसिकली इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन राइट नाउ। इस टाइम पे हम लोग जो अगर ये पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे तो भी हमारी पॉपुलेशन जो है सिल्वर इकोनॉमी की वो ऑलरेडी बूम करेगी 20 to 25 years के अराउंड आज से। Now we come on to the conclusion. The conclusion is rather than incentivizing larger families, अब हम लोग बेसिकली एक स्टैंड ले रहे हैं कंक्लूजन में कि डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट कि हमें इंसेंटिवाइज करनी चाहिए लार्जर फैमिलीज या नहीं। अब इसमें हम लोग स्टैंड ले रहे हैं कि हमें लार्जर फैमिलीज को इंसेंटिवाइज नहीं करना चाहिए। बट वी आर नॉट टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड। हमें कोई भी चीज जब भी हम आंसर करते हैं हमें एक बैलेंस स्टैंड रखना होता है यूपीएससी में। ठीक है। We'll answer, but with a very balanced point of view. Okay, see how we have tried to answer this. Rather than incentivizing larger families, India's policy should shift focus towards demographic resilience. We should focus upon कि जितनी population हमारी इस time पे है, हमारा demographic dividend है, that changes to demographic resilience. उनको हम लोग अच्छी opportunities provide करें instead of focusing upon incentivizing larger families. This entails strengthening geriatric healthcare. अब क्या क्या पॉइंट्स इंश्योर करने में, जीरियाट्रिक हेल्थ केयर इज बेसिकली जो ओल्ड एज पीपल हैं उन लोगों के लिए हेल्थ केयर हमें इंश्योर करनी है। एक्सपैंडिंग सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स। सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स क्या आते हैं, पेंशन होनी चाहिए ओल्ड एज में एंड दिस ऑल थिंग। एंड इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू अपस्किलिंग एंड ऑटोमेशन टू एनहांस लेबर प्रोडक्टिविटी। ये सारे स्टेप्स पे इंडिया को काम करना चाहिए सो दैट वी वर्क अपॉन डेमोग्राफिक रेजिलियंस। जितनी पॉपुलेशन है दैट शुड ग्रो इन अ हेल्दी मैनर। ठीक है, बोथ इकोनॉमिकली एज वेल एज इन योर हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट। Furthermore, improving female labor force participation can act as an economic stabilizer. Female labor force participation अगर हम increase करेंगे, that will also act as an economic stabilizer. उससे economy को boom मिलेगी. Offsetting the potential decline in the working age population. ठीक है. Ultimately, India must prepare for a transition to a mature demographic structure by focusing on quality of life and economic sustainability. अल्टीमेटली कह रहे हैं कि इंडिया विल हैव टू प्रिपेयर फॉर अ ट्रांजिशन जिसमें कि हम लोग एक मेच्योर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, जिसमें कि ओल्ड एज के लोग ज्यादा होंगे। उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना होगा पहले तो। देन वी शुड फोकस अपॉन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ कि हम लोगों को अच्छे से हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करें, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंश्योर करें and economic sustainability ensure करें rather than pursuing numerical population growth. So this is the conclusion and balanced. This is how you need to approach your answers and answer writing in mains. I hope this was very clear to you. ठीक है, and I hope जो भी आज के सेशन में आर्टिकल्स कवर किए हैं those are clear to you. इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड यू शुड रिवाइज दिस। आई विल आल्सो सजेस्ट यू टू वॉच यस्टरडे सेशन सो दैट आप लोग पॉपुलेशन का आर्टिकल अच्छे से समझ पाए इन अ वेरी बेटर मैनर। ओके, सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर टुडे।